Dear students, in this video I am trying to solve some questions which were asked in 2019 BSc Part 1 Chemistry Honors Examination. So आज हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं. And these questions involve some basic concepts of chemistry and we will learn how this concept will apply to solve the questions. So as you can see that this is your question paper of 2019 and here is the question is asked in this question: chloroacetic acid is stronger acid than acetic acid. यहाँ पे हमें बताना है कि क्लोरोएसिटिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एसिटिक एसिड से. तो इसको समझने के लिए हम एक कंसेप्ट अप्लाई करेंगे एंड दैट कंसेप्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट. वी विल सी हाउ दिस कंसेप्ट विल अप्लाई. You see here I have summarized some of the important questions and solved them. If you need these notes and PDF files, you can ask me in comments. I will send you. So the first question is, chloroacetic acid is stronger than acetic acid. Why? So the answer lies in the structure. If you see the structure here, यहाँ पे स्ट्रक्चर है. देखिए क्लोरोएसिटिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड पे जो कार्बोनिल है इसके अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है. There is chlorine present at alpha position to the carbonyl group. और एसिटिक एसिड में तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं. We have 3 hydrogens present at the alpha position to carbonyl group. But in chloroacetic acid we have chlorine present in alpha position of the carboxyl group. So due to presence of this electron withdrawing group, it will generate minus I effect. And the minus I effect is 1 times present in chloroacetic acid and there is no minus I or negative inductive effect present in acetic acid. So due to presence of this negative inductive effect, the corresponding carboxylate ion is more stabilized because this minus charge can be better stabilized due to electron withdrawing nature of this chlorine atom, which is not present in acetic acid. So this is the reason why chloroacetic acid is more stronger acid than the acetic acid. You can see here I have written the answer. Acidity is the measure of capacity to release the proton from a molecule. As we know, the chloroacetic acid contains 1 chlorine atom attached to the carbon atom which is adjacent to the carboxylic group. Since chlorine is highly electronegative element of the atom which possesses the negative inductive effect. Consequently, it generates a small positive charge inside the molecule which facilitates the removal of proton from the molecule and it enhances the acidity. While in acetic acid, instead of chlorine atom, there is hydrogen atom which does not have any inductive effect. Hence, it does not facilitate the removal of proton from the molecule. Hence, chloroacetic acid is stronger acid than acetic acid. Additionally, it stabilizes the carboxylate anion. So, this is the answer of this question. Now, you can see we will take another question. Here it is asked that orthonitrophenol and paranitrophenol can easily be separated. तो हम दोनों के मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इसका आंसर हम देखते हैं. How orthonitrophenol and paranitrophenol can be separated. हम इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे. तो देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है. अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर देखें, इफ वी लुक इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वी कैन इजीली सी दैट इट कैन फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Within the same molecule it can form the hydrogen bonding and this hydrogen bonding is strong. And due to strong hydrogen bonding or intramolecular hydrogen bonding, the boiling point and the melting point of this orthonitrophenol is high. And in paranitrophenol there is
intermolecular hydrogen bonding. So students, remember that always intermolecular hydrogen bonding is stronger than the intramolecular hydrogen bonding. जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होगी तो वो कम स्ट्रांग होगी. तो इस वजह से जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसका मेल्टिंग पॉइंट 44 डिग्री सेल्सियस है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 113 डिग्री सेल्सियस है. तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल 44 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट कर जाएगा, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल 113 पे मेल्ट करेगा. तो इसको इजीली हम 45 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके मेल्ट करके सेपरेट कर सकते हैं. तो इसीलिए दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण हम इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं. और मेल्टिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ इंट्रा एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. और भी कंपाउंड्स में प्रेजेंट हो सकती है, जैसे एक क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, लेकिन इस एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया. दैट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सैलिसिलिक एसिड. इट इज आस्क्ड दैट द एसिडिक नेचर ऑफ सैलिसिलिक एसिड. तो सैलिसिलिक एसिड में भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. देयर इज अनदर क्वेश्चन. You can see that dimethylamine is more basic than the methylamine. Dimethylamine methylamine से ज़्यादा बेसिक क्यों है, इसको देखते हैं. तो the question is dimethylamine is stronger base than methylamine. इसके लिए when we will compare the corresponding basicity of amines, because you all know that amines are basic in nature. Why? Because they have lone pair of electron on nitrogen atom, and these lone pairs present on the nitrogen atom makes them basic in nature. Lewis acid base principle क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर बेसिस. अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन क्या होते हैं? अगर सिर्फ NH3 है, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, देन इट इज अमोनिया. इफ वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विद द अल्काइल ग्रुप, इट इज प्राइमरी. 2 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड, इट इज सेकेंडरी, एंड ऑल द 3 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड, इट इज टर्शरी. नाउ द क्वेश्चन इज डाइमेथाइल अमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन methylamine. It can be better asked that in aqueous solution dimethylamine is stronger base. As you can see here in the second line, secondary amine is most basic, then primary, then tertiary, and then ammonia. Now reason behind this fact is that alkyl groups are electron donating group. They are groups which exerts plus I effect or positive inductive effect. So due to presence of alkyl group in primary amine, there is one time plus I effect. Due to presence of 2 alkyl group in secondary amine, there are 2 times of plus I effect. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेकेंडरी अमीन में ज़्यादा होगी प्राइमरी अमीन से, और टर्शरी अमीन में उससे भी ज़्यादा होगी क्योंकि 3 alkyl ग्रुप है. तो इस हिसाब से अगर इफ वी अप्लाई दिस कंसेप्ट, देन वी कैन से दैट टर्शरी अमीन इज मोस्ट बेसिक. बट actual picture is different. Tertiary amine is not most basic. Most basic is secondary amine. Why? Now the concept of steric hindrance comes in the picture. Since in tertiary amine we have 3 bulky groups, 3 methyl groups. So 3 methyl groups are bulky groups. So once they occupy more space to arrange, the lone pair of nitrogen is very difficult for donation. तो टर्शरी अमीन में क्योंकि 3 मेथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इट विल बी डिफिकल्ट टू डोनेट द नाइट्रोजन लोन पेयर. सेकेंडरी अमीन में 2 ही अल्काइल ग्रुप हैं, तो इसलिए ये थोड़ा कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे. ड्यू टू दिस रीजन द डोनेशन ऑफ लोन पेयर विल बी इजी. एंड इन प्राइमरी अमीन देयर इज ओनली 1 मेथाइल ग्रुप. So due to 1 methyl group, it has
लेस प्लस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी अमीन. So due to this reason, it is less basic than the secondary amine. And tertiary amine, although it has 3 methyl group, but steric factor is so more here that is compensate the inductive effect concept. So the actual order of basicity comes in aqueous phase is secondary, then primary, and then tertiary. But in gaseous phase, the picture is different. In gaseous phase, we have tertiary amine most basic, secondary, then primary, then ammonia. Why? Because in gaseous phase amines molecules are separated well far apart, but in aqueous solution they are hydrogen bonded with the solvent, so that's why they are trapped with the solvent molecule. तो जब solvent molecule से trapped रहेंगे तो it will be steric factor will come in the picture, but in gaseous phase no steric factor will come in the picture, and the basicity of amine will be decided by the inductive effects. So this is the explanation of this question. One more question is asked there, how you will distinguish between primary, secondary and tertiary amines. हम तीनों में अंतर कैसे पता करेंगे. अभी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन बताया. तो अगर हमको लैब में दिया जाए 3 सैंपल और कहा जाए कौन सा प्राइमरी अमीन है, कौन सा सेकेंडरी अमीन, कौन सा टर्शियरी अमीन, इसमें कैसे डिफरेंस करेंगे. तो इसके लिए देखिए हम एक टेस्ट करते हैं, एंड दैट टेस्ट इज नोन एज हिंसबर्ग टेस्ट. टू कंडक्ट दिस टेस्ट वी रिएक्ट द सैंपल विद हिंसबर्ग रिएजेंट. एंड व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. And when the primary amine react with benzene sulfonide chloride, one of the hydrogen of nitrogen is substituted by benzene sulfonide chloride. So by the removal of hydrogen chloride we get N-alkyl benzene sulfonamide, and once we add the aqueous NaOH, it solubilizes in aqueous NaOH. Why? Because it forms the sodium salt. So primary amine react with the benzene sulfonide chloride and form the sodium salt and solubilize in NaOH solution. And secondary amine, it reacts with benzene sulfonide chloride by replacing one of the hydrogen attached with nitrogen, but it does not soluble in NaOH because it does not have more hydrogen. And in tertiary amine, it does not react with the benzene sulfonide chloride. It appears as insoluble in NaOH, but soluble in aqueous HCl. Why? Because from hydrochloride salt. Remember, tertiary amine does not react with benzene sulfonide chloride and also insoluble in NaOH. Secondary amine react with benzene sulfonide chloride but insoluble in aqueous NaOH. And primary amine reacts with benzene sulfonide chloride and soluble in aqueous NaOH solution. So by applying this concept and these 3 reactions, we can easily distinguish between primary, secondary and tertiary amine, and this is very important method to distinguish between primary, secondary and tertiary amine. Here you can see in this picture we have the 3 test tubes. You see, one test tube is transparent, that is the primary amine, which is soluble in aqueous NaOH. One is not soluble, that is secondary amine, and one does not react, that is the tertiary amine. So in this way you can differentiate between primary, secondary and tertiary amine. So this is all for this video, and in next video we will take other questions. So thank you very much.